Okay, so multiple regression, first reading. Um, okay, so an important session because cons is something that everyone fears. So please be very attentive. Ask me any questions that you have. So multiple regression is an extension of your simple linear regression where you have more than one independent variable which helps explain the dependent variable. So multiple regression is in this form: y equals beta naught plus beta 1 x1 plus beta 1 beta 2 x2 plus beta p xp plus some error term, right? And this x1 x2 till xp, all these are independent variables, right? So there is more than one independent variable that helps explain a single dependent variable, right? There is more than one independent variable that helps explain the single dependent variable. So this is my single dependent variable. Okay, so the main difference between simple linear regression and multiple linear regression is that in multiple linear regression, there is more than one independent variable. There is more than one x. The similarity is that there is only one dependent variable. In both cases, in both simple and in multiple, there is only one dependent variable y. Okay, are we good here? Have we understood this? Should I move forward? Yes. Yes, sir. Now, how will you interpret the slope coefficients and intercept in multiple regression? Remember again, calculation of beta naught, beta 1, beta 2, calculation of this slope coefficients is done using the OLS method. OLS stands for what? Ordinary least squares. And the goal of ordinary least square is to minimize your sum of squared errors. Goal of OLS is to minimize the sum of squared errors. So that is how coefficients and intercepts were calculated in simple linear regression. We are going to use the same method here. Uh, the intercept and the slope coefficients would be calculated in such a way that the sum of the squared errors of the regression is at its minimum, right? Now the calculation of beta naught, beta 1, beta 2, all this is not relevant. How to calculate this is not a part of our syllabus. Uh, we only need to be aware that these are calculated in such a way that the sum of squared errors are at its minimum. Okay. Uh, and see, there are software packages to do this. The CFA Institute wants you to be uh, want you to understand how to interpret these coefficients rather than how to calculate them, because then you can easily calculate them using Excel or any other software package like R or Python, right? Okay, now interpretation of slope coefficients and interpretation of intercept, which is beta naught, and slope coefficients, that is beta 1 to beta p. Okay, so how will you interpret the intercept? So say my um,
multiple linear regression equation is something like this: beta naught x1 plus, sorry, beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus some error term. Okay, so how will we interpret this equation? So here beta naught is my intercept. So how I'm going to interpret this? So we are going to say that if x1 and x2 equal 0, then my dependent variable y equals the intercept beta naught. So please write this down. If x1 and x2 both equal 0, then dependent variable y equals intercept beta naught. Are we good here? Guys, any issues here? So interpretation is same for simple linear regression. Interpretation of the intercept is same under simple and multiple linear regression. कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े? Yes. How are we going to interpret x1 and x2? Sorry, how are we going to interpret b1 and b2, the slope coefficients? So see, b1, this b1, this b1 is the change in y. Sorry, this b1 is the change in y if x1 changes by 1 unit, keeping x2 constant. b1 is the change in y if x1 changes by 1 unit, keeping x2 constant. Please write this down. b1 is the change in y if x1 changes by 1 unit, keeping x2 constant. And how are we going to interpret b2? b2 is the change in y if x2 changes by 1 unit, keeping x1 constant. So we are going to write this. b2 is the change in y if x2 changes by 1 unit, keeping x1 constant. So let me explain this with an example. Let me give you some equation. Okay. So say earning growth is my dependent variable, which is which has this kind of a multiple linear equation. dp is your dividend payout plus 0.14 yield curve slope, right? So this is my multiple linear regression equation of my multiple linear regression. We are going to now interpret each of these things, each of the intercept and slope. Okay, so how am I going to uh, interpret this intercept of -11.6? इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? So we are going to say that if dividend payout and yield curve equal 0, then earning growth is going to be -11.6%. Please write this down. If dividend payout and yield curve slope equals 0, then earning growth equals -11.6. Guys, have we understood this? Yes. Yes. Now next is how are we going to interpret this coefficient of dividend payout 0.25. Please understand this now. If dividend payout ratio increases by 1%, then earning growth will increase by 0.25%, keeping yield curve slope constant.
If dividend payout increases by 1%, then earning growth will rise by 0.25%, keeping yield curve slope constant. And lastly, how are we going to interpret 0.14, which is the coefficient of yield slope? Again, if the yield curve slope increases by 1%, then earning growth will rise by 0.14%, keeping dividend payout constant. So this is how we interpret the slope coefficients. Guys, are we good? Any issues? Any issues with the interpretation? No, sir. Okay, now I'm going to discuss the ANOVA table with you. Okay, now there are certain, before that, there are certain assumptions of multiple linear regression. They are the same as the assumptions of simple linear regression. The only difference is that one of the assumptions of multiple linear regression is that there should be no correlation or very little correlation between the independent variables. There should be little correlation between dividend payout and yield curve slope. Why? Apart from all those assumptions that we had in linear regression, there is one extra assumption of, in multiple linear regression, that there should the correlation between the independent variables should be very low or should be less. Why? Can you gather this? Why? Why should there be little correlation between the independent variables? सोचो guys. मतलब जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में assumption था वो तो है ही कि error term should be normal, distributed, the mean of the error term should equal 0, फिर the variance of the error term should be constant, or there should be a linear relationship between y and x, है ना? Apart from all those assumptions, there is one more assumption that independent variable should not be correlated. ये क्यों है ये assumption? बताओ. Independent variables x1 x2 should not be correlated. ये assumption क्यों है? क्योंकि फिर हम लोग को पता नहीं चलेगा कि y को कौन एक्सप्लेन कर रहा है. Right, if x1 and x2 are correlated, we will not be able to understand which of the two independent variables is explaining the dependent variable y. Right, समझ रहे guys? तुम लोग समझ रहे हैं? So we will not be able to credit which variable is doing better in explaining y. तो एक तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे तुम लोग शादी हो गया है और तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी वाइफ दोनों किचन में एक ही डिश बना रही है. अब वो डिश तुमको वो पड़ोसी तुमको बहुत अच्छा लगा. अब तुम ये नहीं बोल पा रहे कि तुम्हारी वाइफ की वजह से वो अच्छा बना कि तुम्हारी मम्मी की वजह से अच्छा बना, और तुम किसी को भी बोला कि अच्छा बनाया तो दूसरा नाराज हो जाएगा. यू आर गेटिंग द आइडिया? ऐश्वर्य, महक, पुलकित, आर यू गेटिंग द आइडिया? Yes, sir. Yes, sir. तो there should be little correlation between the independent variables, because then it will be very difficult to identify which independent variable helped us explain the dependent variable. Which of the x's, मतलब not x's, मतलब which of the x x1 x2 explained the y. ठीक है, you getting the idea? So apart from all those assumptions, this is one more assumption. बाकी assumptions क्या था सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, उसमें ये भी जोड़ दो. वो सब था ना. There should be a linear relationship between x and y, variance of the error term should be constant, uh, there should be no correlation amongst the error terms. वो भी था ना एक, याद है कि correlation between error terms नहीं होना चाहिए? याद है कि नहीं? तुम लोग पढ़ा था Yes. कि नहीं? हाँ. अगर Yes, sir. Yes. error term में correlation है तो क्या प्रॉब्लम है?
So some pattern is not captured. very good, Pulkit. Some pattern has not been captured by my regression model. That is why वो error term में shift हो गया है, pattern वो error term में दिख रहा है. Because my regression model has failed to capture that pattern, so the pattern is now being reflected in my error term. So एरर टर्म्स में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, और ये भी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अपने को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई को बेटर एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, आर वी क्लियर? मैं आगे बढ़ूँ गाइस? हेलो ऐश्वर्य, पुलकित, महक, आगे बढ़ूँ? Yes, sir. Yes, अब sir. अपना एनोवा टेबल है, ये एनोवा टेबल अपने को पता ही है, bifurcates total variation into explained and unexplained. तो ये तो अपने को पता ही है, एस एस आर क्या है, एस एस सी क्या है, ये तो लेवल वन में किए ही थे. ठीक है ना? एस एस आर क्या है? अच्छा, Residuals. एस एस सी इज क्या? एस एस टी, नहीं. सम ऑफ स्क्वायर टोटल. ठीक है ना? तो इसको मैं एक बार रिकैपिचुलेट करा देता हूँ ताकि क्लास के लिए इजी हो जाए. अम, तो ये मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के टर्म्स में बता रहा हूँ. ठीक है ना? क्योंकि देखो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या है कि ये तुम्हारा जो चार्ट है वो टू डायमेंशनल है, बिकॉज सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट है और एक ही डिपेंडेंट है. लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, थ्री डायमेंशनल हो जाएगा या फोर डायमेंशनल हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में चार्ट ऐसा नहीं लगने वाला, ऐसा स्कैटर प्लॉट नहीं लगने वाला, बिकॉज दो तीन वेरिएबल आ जाता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाता है, तो इट्स नो लॉन्गर टू डायमेंशनल. डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देर आर, वो थ्री फोर फाइव डायमेंशनल हो जाएगा. लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये बता देता हूँ. तो ये मेरा लाइन ऑफ बेस्ट फिट है. ठीक है, ये मेरा y है, ये मेरा x है, ये y एक्चुअल है, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे प्रिडिक्टेड y है, और ये मीन ऑफ y है. तो माई सम ऑफ स्क्वायर टोटल इज व्हाट? ये sum of square total is the sum of square differences between actual value of y and mean of y. So this is my total variation. कैसे कैलकुलेट करते हैं? Summation I equals 1 up to 10 uh, y actual minus mean of y का whole square. This is my total variation. और एस एस आर क्या है? It is the sum of square difference between predicted y and mean of y. Right, so summation of I equals 1 up till n y predicted minus mean of y का whole square. Right, so इसको अपने क्या बोलते थे? इट इज द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल
explained by my independent variable, and SSR, higher the better, higher the better. एक सेकंड गाइस. हेलो. हाँ जी बोलिए. भाई गड्डी गई हुई है आज. हाँ जी. हम्म. मैं पूछ के दसना भाई, मैं पूछ के दसना. मानो आधा घंटा दो. मैं दोनों पूछ के दसना. मैं भाई, मैं पूछ के दसना, दोनों पूछ के दसना. मैं पूछ के दसना. हाँ. Okay, so higher the SSR, better it is. Why? Because then my independent variables are explaining a lot of my dependent variable, right? Then my independent variables are explaining a lot of my dependent variable, right? A lot, or other way of saying is a lot of the variation in the dependent variable is being explained by my independent variables. So this is my SSR, higher the better. And the last is your SSE. This is your SSE. It is the sum of squared differences between actual y and predicted y. And the goal of regression is to minimize this, minimize the error, right? So we calculate these intercept and slope coefficients. We calculate these intercept and slope coefficients in such a way that this SSE is minimized. This sum of squared differences between y actual and y predicted gets minimized, right? The goal of regression is to minimize this. Guys, याद आ गया ये? कोई प्रॉब्लम है इधर? कोई प्रॉब्लम है किसी के? No, sir. ना y, ये k क्या है? Number of independent variables. So y has SSR. Y is degrees of freedom of SSR, the number of independent variables. SSR का डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्यों है? Because say if number of independent variables दो है, then there are two independent variables that are trying to explain the variation in the dependent variable. That is the reason, right? So this is explained variation, right? This SSR is basically explained variation, and SSE is the variation that is unexplained. So SSR has SSR degree of freedom is the number of independent variables. Why? Because if the number of independent variables are two, then two independent variables are explaining the variation in the dependent variable. और इसका n minus k minus 1 क्यों है? ये समझ में आया guys? Why SSR has k degrees of freedom where k is the number of independent variables? ये समझ में आया? Yes or no? Yes, sir. अब ये SSE का n minus 1, n minus k minus 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? गाइज एक चीज तुम लोग को बता देते हैं, ये ख्याल रखना, बुक में नहीं है. इफ देर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड थ्री ऑब्जर्वेशंस, देन ऐसा रिग्रेशन मॉडल में ना आर स्क्वायर विल ऑलवेज इक्वल 1. आर स्क्वायर तुम लोग को याद होगा. आर स्क्वायर याद है क्या है गाइज? याद है आर स्क्वायर? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. Yes. So, तो ऐसा मॉडल महक याद है? ऐश्वर्या याद है? yes, sir. अगर
कोई ऐसा मॉडल हुआ जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और तीन ऑब्जर्वेशन है, थ्री सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका आर स्क्वायर हमेशा वन होगा, राइट? उसमें कोई एरर होगा ही नहीं, ठीक है? तो मैं तुमको ये दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ एक्सेल में तुम लोगों को ये चीज दिखा दो। जैसे ना डेटा बना लेते हैं कुछ भी रैंडम, ठीक है? ये x1 कर देते हैं, ये x2 कर देते हैं, मैं कुछ भी टाइप कर लूँ, मेरी मर्जी, और ये y कर देते हैं। अब ये टोटली रैंडम है, इसका रिग्रेशन करते हैं, कैलकुलेट, डेटा पे जाएंगे, डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, अपने रिग्रेशन को पकड़ेंगे, ये रिग्रेशन एक्स वाई रेंज में अपने ये ले लेंगे, एक्स रेंज में ये दोनों ले लेंगे, आउटपुट रेंज अपने इस बुक में यहाँ ही कर देते हैं, सॉरी एक्स रेंज ठीक से सिलेक्ट नहीं किया, और आउटपुट रेंज। तो देखो ये आर स्क्वायर इसका हमेशा वन ही आ रहा है, मतलब मॉडल में कोई एरर है ही नहीं, है ना? मॉडल में कोई एरर है ही नहीं, मॉडल में कोई एरर है ही नहीं, इसका यही मतलब है, ठीक है ना? तो इट्स ओनली व्हेन यू ऐड द फोर्थ ऑब्जर्वेशन that r square will be less than 1 and there is going to be some error। तो अब एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन ऐड करके देख लो, कोई भी डाल देते हैं। फिर से डेटा में जाओ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं। देखो अब तुम्हारा थोड़ा आर स्क्वायर जो है वो लेस देन वन है एंड देयर इज सम एरर इन द मॉडल, राइट? तो इफ यू हैव three observations and two independent variables, then you have three observations and two independent variables, then you have 0 degree of freedom. Your model is not free to vary, it's going to have zero errors. It's only when you have the fourth observation and two independent variables that you have 1 degree of freedom, you have some degree of freedom, your r square is less than 1, there is some error in the model and your model is free to vary. That is why n minus k minus 1 degrees of freedom hota hai of your SSE, of your unexplained variation. Is this clear guys? Is this clear? कोई इशू है? मैं आगे बढ़ूं? बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी के? Yes. कोई भी प्रॉब्लम? ऐश्वर्य, पुलकित, महक, कोई प्रॉब्लम? No, sir. समझ में आ रहा है ऐश्वर्य कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है सर। क्या समझ में आया? डर कम हुआ रिग्रेशन से? हाँ डर कम लग रहा है? लग रहा है कि हो जाएगा? हाँ, तुम हो सकता है, क्या? हो जाएगा मतलब अभी क्लास कर रहे हैं। अच्छा, अब आओ नेक्स्ट चीज पे। अब आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर पे डिस्कशन कर लेते हैं। आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे कैलकुलेट होता है? एस एस आर बाई एस एस टी
इसका वो क्या है डेफिनेशन? वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हायर द बेटर, higher the better. Why? Because if r square is high, then my independent variable is explaining a lot of the variation in the dependent variable, right? My explanatory part of my model is good, right? And error term is low, right? If error term is low, so this is how we calculate r square. तो अपने को पता है कि एस एस टी इक्वल्स एस एस आर प्लस एस एस ई. So I can write SSR as this SST minus SSE, and then I can replace SSR with this. So I can write SSR as SST minus SSE by SST, which can also be written as 1 minus SSE by SST. ठीक है, तो ये आर स्क्वायर का फॉर्मूला है. अपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बोले थे कि coefficient of determination equals correlation square, but this is applicable only for simple linear regression, not for multiple linear regression. Not for multiple linear regression. तो ये चीज को ख्याल रखना. ओके, सो आर स्क्वायर से अपने जज करते हैं कि हाउ मच वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बट बताए, एक इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आर स्क्वायर में. बोलो क्या प्रॉब्लम है गैस, बोलो बहुत क्या बड़ा प्रॉब्लम है आर स्क्वायर में. तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मेरे को कुछ रिस्पॉन्स तो करो, मेरे को समझ तो आए कि तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है. आ रहा है सर अभी तक. बोल के तेरे को. यस सर, आ रहा है. महक तेरे को समझ में आ रहा है? Yes, sir. कॉन्फिडेंस आ रहा है कॉन्ट्स में? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? अरे, यस सर, यस. तो अब आर स्क्वायर में प्रॉब्लम क्या है ये बताओ. देखो, प्रॉब्लम विद आर स्क्वायर इज दैट you know it will always increase as we add new independent variables, even if those independent variables are totally unrelated, totally useless. ठीक है ना? तो मतलब सपोज करो मेरा एक सिंपल सा रिग्रेशन है where I'm saying that okay, EPS growth is a function of the company's net profit growth plus sales growth plus cost efficiency. ठीक है ना? एंड से इस रिग्रेशन का आर स्क्वायर है 90%. अगर मैं अब इसमें एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालू ना, सोचो कोई बोलो एकदम टोटली अनरिलेटेड, बोलो ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सोच के बोलो तो कोई टोटली अनरिलेटेड. सर अकाउंट रिसीवेबल. हम्म.
क्या? अकाउंट रिसीवेबल। नहीं, वो तो रिलेटेड ही है ना। अगर अकाउंट्स रिसीवेबल पे नहीं कर पाया तो मतलब टोटली अनरिलेटेड बोलो। Number of suicides in country. हाँ, In suicide in country. नंबर ऑफ Suicides in country. सुसाइड। ए साला टॉक्सिक आदमी है तुम तो। Number unemployment level maybe. नहीं नहीं। तो क्या चाहिए फिर? आए तो बता। अम, अ, एम्प्लॉयज का स्पाउसेस का एज। ठीक है, एम्प्लॉय का स्पाउसेस का एज, ये तो टोटली अनरिलेटेड है ना कि कोई मतलब है? विल शुड दिस इफेक्ट द ईपीएस ऑफ द कंपनी? काफी अनरिलेटेड है कि नहीं? हाँ। पता नहीं सर, डिपेंड करता है। नहीं, तो मान लो टोटली अनरिलेटेड है, मान लो कि टोटली अनरिलेटेड है, तो even if we add this totally unrelated variable, r square is going to increase from 90 to some, r square is going to increase from 90%, right? So the problem with r square is that it will always increase even if we add totally unrelated variables in our multiple regression equation. So to overcome this issue, what we do is we calculate adjusted r square, ऐसे डिनोट होता है r square a, right? And this adjusted r square increases only if the new variable actually improves the model, and this adjusted r square will decrease if the new variable is totally unrelated, totally useless, right? So r square is rewarding good variables, good is rewarding good independent variables and punishing the useless independent variables. ठीक है ना? तो we calculate adjusted r square. अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, पहले भी तो आया था। सुरजीत, एक बार तुम भाभी से बात कर लो। ओके, वन माइनस आर स्क्वायर एन माइनस वन एन माइनस के माइनस वन, right? Now what is this k here? K is the number of independent variables and n is the number of observations. ठीक है, we calculate the adjusted r square. So if adding new variables increases the adjusted r square, it's only then that adding those new variables makes sense. अब ये तुम फॉर्मूला को देखो, k is the number of independent variables. तो अगर k बढ़ेगा, if I add more independent variables, then k बढ़ जाएगा, ठीक है ना? Then what would happen to the denominator, guys? ये denominator को क्या होगा if k increases? Will it come down or will it go up? The denominator. Decrease. Decrease. If the denominator decreases, what would happen to this term under the parenthesis? What would Increase. happen? It will increase. And if I deduct 1 from this term, what will I get? I will get a lower number, है ना?
Yes, sir. फिर से सुनो, if k increases the denominator is going to decrease and the term under the parenthesis is going to rise, and if I deduct 1 from that higher number I am going to get a lower number, so my r square is going to fall, adjusted r square is going to fall. So what this means is that what this formula is really trying to do is that if the number of independent variable increases without a reasonable increase in r square, then adjusted r square falls. Please write this down. If k increases without a reasonable increase in r square, then adjusted r square falls. So that is what this formula is doing. It's penalizing bad independent variables, useless independent variables, and it's rewarding यूजफुल वंस. ये फॉर्मूला का इंट्यूशन समझ में आया? गाइस ये फॉर्मूला का इंट्यूशन समझ में आया? Yes, sir. तो एक बात, ऐश्वर्या, महक, ये फॉर्मूला का इंट्यूशन समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. मतलब दबा दबा मत बोलो, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, ये बोलो मेरे को. तो ये चीज प्लीज राइट दिस डाउन. इफ adding new independent variables increases the adjusted r square, then adding those new independent variables makes sense and we should choose the new model over the original model. And if adding new independent variables reduces the r square, then these new independent variables are useless and we should choose the original model over the new model. तो इस पे एक क्वेश्चन करके तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, ये आ सकता है, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. Suppose n is 60, number of independent variables k is 5, SSR is 460 and SSE is 170. Please calculate r square and adjusted r square of this model. ठीक है ना? तो पहले r square कैलकुलेट करेंगे. We know it is SSR by SST. तो पहले SST कैलकुलेट कर लो. इट इज सम ऑफ SSR एंड SSE. और r स्क्वायर हो गया SSR by SST विच इज 460 by 630. ये कितना हुआ? व्हाट इज 460 by 630? 73%. 70. अब एडजस्टेड r स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. 1 minus r square n minus 1 n minus k minus 1. तो 1 माइनस आर स्क्वायर क्या हो गया? 1 माइनस 0.73. अब इसको स्क्वायर मत कर देना. आर स्क्वायर 73 कैलकुलेट किया हुआ है. ये बहुत जन क्या करता है कि 0.73 को स्क्वायर कर देता है. ये गलती मत खा जाना. आर स्क्वायर ही 0.73 है. तो ये यहाँ का कैलकुलेशन में 0.73 स्क्वायर मत कर देना. इसको ऐसे स्क्वायर मत कर देना. एन है मेरा 60 माइनस 1 59 और n माइनस k माइनस 1 है 60 माइनस 5 माइनस 1 54. तो कैलकुलेट एडजस्टेड आर स्क्वायर एंड टेल मी. Sir, 29.5. कितना? कैलकुलेट अगेन. So 70.5. हाँ 70. सबका ये आ रहा है?
प्लीज टेल मी, सबका ये आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, sir. अब we add we add 4 new independent variables in the model. ठीक है ना? तो पहले 5 था, अपने 4 और ऐड कर दिया, अब टोटल 9 हो गया. एंड we know that r square always increases as we add new independent variables. तो अब क्या हुआ? We added 4 new independent variables. Now k has become 9, and this has caused r square to increase to 78. Now we need to decide whether should we use this new model which has 9 independent variables, or should we continue with this old model which has 5 independent variables. Now who is going to help us decide this? Adjusted r square. So calculate the adjusted r square again. We added 4 new independent variables, so total is now 9, and this adding this 4 new forced r square to um, increase to 78. N minus k minus 1 is going to be 60 minus 9 minus 1, which is 50. ये calculate करो. सर 74.04. तो देखो, यहाँ पे एक चीज देखो. When there were 5 independent variables, r square was 73%, and adjusted r square was 70.5. Now we have 9 independent variables. R square is 78 and adjusted R square is 74.04. So my adjusted R square is increasing when I am adding these 4 new independent variables. So this model is good. I'll go with the new model. I will go with the new model which has 9 independent variables. ठीक है ना? तो see, what has happened here is that adding these 4 new independent variables has had a reasonable increase in r square, which has forced the adjusted r square to increase. सपोज करो कुछ ऐसा होता कि अपने 4 नया ऐड करते, लेकिन आर स्क्वायर मेरा सपोज करो सिर्फ 73 से 74 ही होता. देन क्या होता? इफ एडिंग 4 new independent variables increase the r square from 70.5 to नहीं, from 73 to 74. अगर सिर्फ ऐड 4 नया जोड़ने से अगर 73 का 74 होता तो क्या होता? तो हम लोग को क्या न्यू मॉडल चूज करना चाहिए कि नहीं? बताओ कैसे डिसाइड करेंगे? एडजस्टेड आर स्क्वायर फिर से निकालो. व्हेन आर स्क्वायर इज 74, एडजस्टेड आर स्क्वायर फिर से निकालो. So 69.32%. तो फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर तो घट गया ना, 70.5 से 69 हो गया. तो क्या ये नया मॉडल यूज करेंगे? क्या ये मॉडल यूज करना चाहिए? बोलो गाइस, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडजस्टेड आर स्क्वायर अब घट गया है. पहले 70.5 था, अब 69 हो गया. तो नहीं करना चाहिए.
So what has happened here? Increase in the number of independent variables has not resulted in a reasonable increase in R square, forcing the adjusted R square to come down. तो ये है आइडिया, ठीक है ना? तो R square is one way, and adjusted R square and R square is one way to assess with how good our model is, ठीक है ना? Adjusted R square and R square is one way to assess how good the model is. अभी तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई भी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। क्लियर है एकदम? ओके, तो अब अपने आ जाते हैं, apart from R square and adjusted R square, there are other criteria which helps us evaluate how good the model is. That is AIC and BIC. अब इसका जो फुल फॉर्म है वो बहुत गंदा है, वो फुल फॉर्म में मैं जाने का नहीं करूँगा। फॉर्मूलाज भी इसका बहुत गंदा है, एंड इतना गंदा फॉर्मूला है कि मेरे को नहीं लगता कि एग्ज़ाम में ये जज होगा। ठीक है ना? दिस इज AIC एंड BIC, दिस इज अनदर वे टू असेस हाउ गुड द मॉडल इज, ठीक है? अब AIC क्या करता है, BIC क्या करता है, मैं तुमको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। नाउ AIC helps us assess how good the model is in forecasting new unseen data. How good the model is in forecasting future data or new unseen data. And BIC is telling us how good the model fits the sample data. Sample data is the data with which the model was developed, right? So BIC is going to tell me how good the model fits the sample data, and AIC is basically how good the model is in forecasting new unseen data, ठीक है? और इन दोनों चीज के लिए लोअर द AIC, lower the BIC, better it is. Lower the AIC, lower the BIC, better it is. दोनों का वैल्यू जितना कम हो उतना अच्छा। तो अब नीट वे ऑफ रिमेम्बरिंग AIC, मतलब A in AIC सोचो इज स्टैंड्स फॉर अहेड, ठीक है ना? A in AIC सोचो स्टैंड्स फॉर अहेड, एंड अहेड को तुम कोरिलेट कर लो विद फोरकास्टिंग न्यू अनसीन डेटा, राइट? So A in, if you think that A in AIC is ahead, that is going to make you remember that okay, AIC is more forward looking, it's going to help you forecast new unseen data. Thankfully I don't think so in the examination you will have to remember these formulas. Guys, मोटा मोटा क्लियर है तुमको ये? गाइस मोटा मोटा क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ओके, यस सर। मोटा मोटा ये है कि ये, अब बुक पढ़ोगे तो वो बोलेगा कि गुडनेस ऑफ फिट, BIC is good for goodness of fit. Goodness of fit का क्या मतलब होता है? How good the model fits the sample data. BIC को तुम अगर बुक में पढ़ेगा तो वो लिखेगा goodness of fit. अब goodness of fit का इंटरप्रिटेशन है कि how good the model fits the sample data. चलो फिर अपना डिस्कशन हो गया आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, मल्टीपल रिग्रेशन का
सब चीज। अब अपने एक बार टी टेस्ट और एफ टेस्ट समझ लेते हैं। गाइस लेवल 1 का टी टेस्ट ही तुम लोग को याद है? हम लोग टी टेस्ट करते थे टू चेक हाउ टू चेक वेदर द स्लोप कोएफिशिएंट इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। वो टी टेस्ट तुम लोग कल रिवाइज किए थे? यस सर। सब लोग किए थे? यस सर। महक तुम की थी वो चीज, सर। टी टेस्ट? हेलो यस सर। महक? यस सर किया था। हाँ, तो फिर ठीक है। अगर अपने टेस्ट किए थे तो ठीक है। आज अब मैं आज दिन की क्लास का लास्ट टॉपिक अभी तुम लोगों के साथ लेके बैठ जाता हूँ, जो कि है नेस्टेड मॉडल्स। राइट, लिखो नेस्टेड मॉडल्स। क्या टाइम हो रहा है? हाँ, 12:15 ही हुआ। काफी कुछ खत्म कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, तो नाउ ये नेस्टेड मॉडल्स बेसिकली क्या होने वाला है ना, वी आर गोइंग टू रन अ एफ टेस्ट to check whether adding new independent variables makes sense। ठीक है ना? तो सपोज करो ये मेरा ओरिजिनल मॉडल है, y इक्वल्स बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री plus some error term। And now what I want to do is I want to check is whether this x2 and x3, adding this x2 and x3 makes any sense or not। What we are going to do is we are going to check whether adding x2 or x3 helps explain the dependent variable, whether adding them makes sense। So what we do is we create a restricted model where we exclude x2 and x3। So we are going to create a restricted model which is going to exclude x2, x3। So the restricted model is going to look something like this: y equals beta naught plus beta 1 x1 plus some error 2। Now guys, we run a f test to check if x2 and x3 do a good job in explaining y। So f test again hypothesis test होगा। So we are going to set up the null and the alternate। तो मेरा null होगा कि बीटा 2 and बीटा 3 equals 0, and alternate होगा at least 1, that is at least 1 out of beta 2 and 3 is not equal to 0। अब बोलो गाइज, मैं ऐसे क्यों, why am I structuring the null and the alternate in this fashion? बोलो, why am I doing this? Why am I structuring the null and the alternate in this fashion? ये मॉडल को देखो गाइज, इफ बीटा एंड 2 एंड बीटा 3 इक्वल 0, तुम लोग ये वाला मॉडल को देखो। ये मॉडल को मैं अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल बोलूंगा। अब ये वाला तुम मॉडल देखो,
if beta 2 and beta 3 equal 0, then it does not matter what value x2 and x3 has, they will never change y. Am I correct? Correct. If Yes, beta sir. 2 and beta 3 equal 0, then x2 और x3 का कोई भी वैल्यू हो वो y को कभी चेंज नहीं करेगा. तो फिर क्या होगा? If beta 2 and beta 3 equal 0, this means that there is no linear relationship between x and y. There is no linear relationship between x2, x3 and y. Okay, there is no linear relationship between x2 and y and x3 and y. There is no linear relationship, right? It's only when beta 2, beta 3 are different from 0 that changes in x2 and x3 will change y. ठीक है ना? तो for x2 and x3 to explain y, beta 2 and beta 3 should be different from 0, right? They should be far away from 0. So, you know, if we end up rejecting the null and favor the alternate, then we can conclude that, you know, x2 and x3 have some linear relationship with y, and x2 and x3 will help explain y. So it's only when beta 2 and beta 3 are very far away from 0 and you end up rejecting the null that you can conclude that x2 and x3 will help explain y, and there is some kind of a linear relationship between them. Guys, ये समझ में आया तुम लोगों को? सबको ये समझ में आया? yes or no? पुलकित, ऐश्वर्य, महक, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट है? महक, तुमको कोई डाउट है पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट चीज है दिन का, फिर खत्म. मतलब फिर रात का क्लास. No doubt, sir. ओके, तो अब अपने इसको टेस्ट करते हैं यूजिंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब अपने को पता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेवल 1 में किए थे कि वो कुछ ऐसा लगता है. इट इज बाउंडेड बाय 0 ऑन द लेफ्ट, राइट, एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए we have a numerator degree of freedom and a denominator degree of freedom, right? यहाँ पे numerator degree of freedom is the number of independent variable excluded, which is 2, right? We have excluded x2 and x3, and denominator degree of freedom is n minus k minus 1. N is the number of observations, k is the number of independent variables, right? So in this case, there are 3 independent variables, x1, x2, x3, right? K is 3. Okay. Now guys, always remember कि ये देखो यहाँ पे एक इक्वल टू साइन है, यहाँ पे एक इक्वल टू, नल में इक्वल टू साइन है. तो मैंने लेवल 1 में बताया था कि जब भी नल में इक्वल टू साइन हो तो टू टेल टेस्ट होता है. लेकिन एफ टेस्ट में क्या होगा? वन टेल टेस्ट. वाई? We only test the right tail. Why don't we test the left tail? बोलो क्यों? Because the left tail is what? Close to 0. ये दिख रहा है? Left tail is close to 0. अरे मुझे तो करना है ना ये कंक्लूड कि बीटा 2 और बीटा 3 0 से दूर हो.
है ना। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टेल्ड में टेस्ट कर दूंगा तो वो तो खुद ही जीरो के पास है। हेलो गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हेलो गाइस, Yes, sir. ऑल ऑफ अस। So we never test the Yes. left tail, we always test the right tail in NF test, because the left tail itself is close to zero. And what I'm trying to do is I'm trying to reject the null which says that beta 2 and beta 3 equal 0. If I test the left tail is itself close to zero. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया। हाँ, आया सर, आया कितना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पूरा सर। हम्म, कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग? सब समझ में आ गया। सब समझ आ में गया आ गया? सर। लगता है पेपर फाड़ दोगे फिर? हाँ, इतने पार्ट पे आ जाएगा तो कर देंगे। हम्म, इतने पे ही आ जाएगा तो कर देंगे। इतने पे नहीं, मैं तो पूरा ही करा दूंगा तुम लोगों को। अब तुम लोग बुक पढ़ोगे तो तुम लोगों को थोड़ा इजी लगेगा ना सब? नहीं? तो देखो, अब तुम लोगों को एफ स्टैट निकालना है, एफ स्टैटिस्टिक, एंड यू वुड वांट दिस एफ स्टैटिस्टिक टू बी अ वेरी लार्ज नंबर समवेयर एक्सट्रीम हियर, एकदम राइट टेल पे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? एस एस ये दिया रहेगा, तुम लोग चिंता मत करना, ये सब फॉर्मूला ये लोग तुमको फोर्स नहीं करेंगे याद करने को। ये सब फॉर्मूला गंदा गंदा मेरे को नहीं लगता वो लोग कभी बोलेंगे। तो ये एफ स्टैट है, and if this f stat is extremely deep in the right tail, then you will end up rejecting the null and favoring the alternate that b2 and b3 are different from 0. ठीक है ना? If f stat is a large number and it's in the extreme right tail. तो ये फॉर्मूला का कोई इंट्यूशन देख रहे हो? इस फॉर्मूला का न्यूमरेटर में क्या हो रहा है देखो। We are deducting SSE of the restricted model, the sum of squared errors of the restricted model from the sum of squared errors of the unrestricted model. So this f stat is going to be high only if the SSE of the restricted model is very high compared to the SSE of the unrestricted model. This f stat is going to be very high if the errors in the restricted model are much more than the errors in the unrestricted. So if errors are more in the restricted model, is restricted model good? बोलो guys, अगर error restricted model, नहीं पता। हाँ बोलो, Not good. नॉट गुड, तो रिस्ट्रिक्टेड मॉडल में क्या है? x1 है, तो x1 itself is not good, x2 x3 चाहिए, इसका यही मतलब हुआ ना। तो f stat is only going to be very high if errors in the restricted model are more than the errors in the unrestricted model, which means that x1 alone is not sufficient, we need x2 and x3 which are there in the unrestricted model, right? x2 and x3 are in the unrestricted model which has less errors than the restricted model. Restricted model only has x1, right? So सर f एक बार ये stat, रिपीट करना। SSE of the restricted model minus SSE of the unrestricted model न्यूमरेटर में है f stat का, ठीक है ना? अब अपने को ये पता है f stat बहुत बड़ा होगा तभी अपने we end up rejecting the null and favoring the alternate, where the alternate says that b2 and b3 are different from 0. At least one of the two is at least different from 0. तो ये f stat तभी बड़ा होने वाला है when errors in the restricted model are more than the errors in the unrestricted model, है ना?
ऐश्वर्य समझ में आया? और एब्स्ट्रैक्ट बड़ा होगा तभी रिजेक्शन होगा। ये समझ में आ रहा है ऐश्वर्य? हम्म। तो अब रिस्ट्रिक्टेड मॉडल में एरर्स ज्यादा है तो क्या वो अच्छा चीज है? नहीं ना। Then that model is not good. Then the restricted model is not good if it has more errors compared to the unrestricted model. And restricted model में क्या है? x1. So if restricted model में errors ज़्यादा है, then x1 alone is not sufficient to explain why. We need x2 and x3 which are there in the unrestricted model. अब समझ में आया ऐश्वर्य? हेलो, यस सर। क्लियर है सबको? महक क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो स्क्वाइजर में एक एग्जांपल है, प्लीज उसको फॉलो करो। तो स्क्वाइजर खोल के देखो, वो एग्जांपल सबके पास है स्क्वाइजर? प्लीज वो जाके उसका एग्जांपल देख के समझो थोड़ा, और मेरे को बताओ कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। मैं उसमें क्रिटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सारा राइट टेल में रहेगा। In spite of having an equal to sign in the null, this is not a two-tailed test, this is a single-tailed test. To be more precise, it's a right-tailed test, not a left-tailed test, because the left tail itself is close to zero, and we want to conclude that B2 and B3 are far away from zero. So no सर point testing. इसमें हाँ हाँ एफ टेस्ट में एस एस सी आर माइनस एस एस सी यू इंटू क्यू किया है ना। हाँ, into Q. Q is the number तो of independent सर variables इसमें that मैं देख रहा था, इसमें एस एस ई आर माइनस एस एस यू डिवाइड बाई क्यू और नीचे भी डिवाइड बाई एन माइनस के माइनस एन। देख लेता हूँ मैं, मेरे में लिखने में गलती हो गया होगा, देखता हूँ एक सेकंड। Let me check the formulae. हाँ सॉरी, डिवाइडेड बाय क्यू। वेरी गुड, ये डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक। नीचे भी सर। हाँ, और एस एस यू डिवाइडेड बाय एन माइनस के। बट मेन फर्क देखो न्यूमरेटर में ये है कि अगर if there are more errors in the restricted model compared to the unrestricted model, then the f stat is going to be high. And it's only when the f stat is high we reject the null and favor the alternate that at least one of b2 and b3 is different from zero, and help explaining why। ठीक है। और अगर errors in the restricted model are more, then x1 alone is not sufficient to explain why we need x2 and x3, right? Because restricted model में सिर्फ x1 है। So if there are more errors in the restricted model, then x1 alone is not good. We need x2 and x3। गाइस ये एक क्वेश्चन देख लो इसमें, क्या कहते हैं तुम्हारा स्क्वाइजर में, एंड देन वी विल, आई थिंक वी आर गुड। एक बार देखो एंड टेल मी इफ इट्स ओके, इफ यू आर हैप्पी, देन वील मूव फॉरवर्ड। या मूव फॉरवर्ड नहीं, अब फिर शाम को। है, मुझे देख के बताओ।